field of higher education. So, we are truly privileged to have you with us today. We are eagerly look forward to your words of wisdom. So, it's a privilege to have you among us today. I request you please kindly grace the stage. Namaskar, Honorable Member of Parliament, Honorable Member of Legislative Assembly, the Director of the institution, faculty members, participants, delegates, invited guests, and the persons from press and media. It's my privilege to be part of this inaugural ceremony of the international conference, which has been conceived on a very relevant and eminent topic. It deals with the amalgamation of various streams, and it deals with the utilization of artificial intelligence in all those fields put together. I have seen the abstract book. It has 119 compositions being penned by various students, researchers, and academicians. I am confident that this particular event will be opening new dimensions for those who are interested in utilizing the technology of the day in furthering their pursuits. Dear students and the participants, you all are aware that the developments and advancements are not anybody's proprietary. The technological advancements are bound to happen. Nobody can stop it because it's the culmination of our creativity, the thought process which every human being has, the way we transform our knowledge, advance our knowledge, and apply our knowledge. That's something which is resulting into various formats which are being perceived in the form of artificial intelligence, or say machine learning, or say big data, and there are numerous such buzzwords which are now trying to rule our life. The creative minds which are sitting over here have to understand that whatever cognitive skills which Mother Nature has provided to you, they cannot be overpowered by any artificial intelligence. But this does not mean that you are not supposed to respect the advances which are happening in the form of artificial intelligence. There is a word of caution which I am giving despite being a strong advocate of the use of technology. Do not allow technology to overpower you. Use technology with your prudence and keep it in mind that this all has been developed by someone like us. It's not coming out of blue. The artificial intelligence based applications which we have, they are simply based on the data which has been generated, the patterns which have been generated, the way we are trying to use them for predictive purposes, that needs to be that needs to be put into practice with a lot of caution. Irrespective of the stream, irrespective of the field, you have to use the data which is available to you with your prudence and see that you are using it only to the extent it should be used. As a country with the highest number of young, say, students, young boys and girls available with us, we are privileged in this 21st century to rule the whole of the world. We have seen that the countries like ours are trying their level best to utilize their young minds for coming out with some wonderful applications. The recent development of DeepSeek by China is one such example.
The America has been ruling the artificial intelligence domain. Their OpenAI, the source code which was available, that has been utilized further, and the brilliant minds are coming up with brilliant applications. The younger generation which is sitting over here, I am proud of each one of you for your creativity, and I am pretty confident that the kind of potential which you have, the kind of hardships in which you are trying to update yourself will definitely, and your perseverance and your endurance, this all will definitely yield into various products like DeepSeeks in coming days. The poster presentation which I have seen some of the good ideas being presented by the students. Whenever I am interacting with the students, I always call upon you to come out with something which is worthwhile in the form of either mobile application or in the form of some predictive tool. Even if you are not in a position to go for any genuine fundamental research, the application part can definitely be taken care of. You as a student in your respective domains have to see how these technologies which are available can be utilized for transferring their uses to the common masses. For a common person, when the Google is making some prediction, he or she is unable to understand how this pattern is coming. If you make some search, it automatically leads you to similar kind of outcomes. How it all is happening? It all is happening because there is a data which is getting generated and captured by some data center, and those data centers are eventually going to decide the direction of your thinking. So that's why I am saying that your cognitive skills should not be superimposed by someone sitting across the boundaries in some remote location and try to regulate your daily practices, your routine activities, and your thinking process. At the same time, there is another important aspect to this advancement which is happening. Before I delve into the detail, let me share you how this all advancement has taken up. We started with the industry 1.0, then we came up to a regime of industry 2.0, then came the industry 3.0, and we are into a realm of industry 4.0. This industry 4.0, when we say, it refers and relates to the cyber physical systems. We do not have the cyber systems alone. We have the cyber physical systems, where we have the integration of information technology, the memory available, computing power which is available for certain productive purposes. Now with this industry 4.0 being propagated across the globe, you might be knowing, or if you don't know, please make a note of it, that the European Union has coined a new industrial development regime. We call it as industry 5.0. Because there is a challenge with the cyber physical systems which we develop. The challenge is, if we will be using an automated system, what will our human resource do? That's a challenge. We cannot go for the complete automation. If we go for complete automation, the one of the most populous country on this planet Earth like ours, what will we do with our human resource? So we need to engage our human resource. This is a big challenge for us, and that's why we want to have the human-centric development. This human-centric development means even if you are going for the robot, you have to have a collaborative robot. Dr. Shiven has made a presentation with respect to the agricultural advancements. He made a reference to the collaborative robots. We need to go for the digital twins. This digital twin means if you have some operation happening in practice, you will be going for a simulated version of it. And on computer screen, you will be visualizing how the things are happening. You may not be going to the shop floor, but definitely you have a control in your hand. So we need to take care of the advances which are happening and the human centricity of those advances. So जो भी विकास हो रहा है, इसको हमें मानव केंद्रित करने की ज़रूरत है. यहाँ पर जितने भी छात्र बैठे हैं, किसी भी विधा के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, आपको ये समझना चाहिए कि जो भी हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, नंबर 1 वो किसी मानव की मौलिक बुद्धिमत्ता से बड़ी नहीं हो सकती. नंबर 2 वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल हमें बहुत सजगता के साथ करना है और ये देखना है कहीं ये हमारे संपूर्ण मानव संसाधन जो हमारे पास उपलब्ध है, हो सकता है दूसरे देशों के पास ना हो. दुनिया के ऐसे बहुत सारे देश हैं
जिनकी आबादी बहुत छोटी है, बहुत थोड़ी है, उनको इस प्रकार के ऑटोमेटेड सिस्टम्स की ज़रूरत है। लेकिन हमारे भारत जैसे देश जिसके पास बहुसंख्यक है, बहुत बड़ी आबादी है, ऐसी बड़ी आबादी को इस्तेमाल करने के लिए हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जो भी हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं उनको ह्यूमन सेंट्रिक करने की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ जो हमारा विकास है उसकी हमें सस्टेनेबिलिटी को भी देख के चलना है। हमें ये देखना होगा कि जो भी हम डेवलपमेंट करते हैं कहीं ऐसा तो नहीं वो हमारी जो सामाजिक आर्थिक विषमताएं हैं, जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक स्पेक्ट्रम है, किसी प्रकार से वो उसमें डिसरप्शन ना पैदा करे, उसमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना पैदा करे। जो हमारी सामाजिक जो हमारा ताना बाना है, जो हमारा पूरी डेमोग्राफी है, उसके अंदर निरंतरता बनी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तकनीक किसी विशेष वर्ग के लिए उसकी उपयोगिता हो और किसी अन्य वर्ग के लिए वो अभिशाप बने। ये हम सबको मिल करके देखना है। आज जो ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का जो विषय है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विभिन्न क्षेत्रों में समावेश करने की बात कही गई है, इस समावेश के अंतर्गत आपको जो भी यहाँ पर विचार प्रस्तुत हों उनको इस दृष्टिकोण से देखने की ज़रूरत है कि आप अपनी चारों ओर, आप अपनी सराउंडिंग्स में, आप अपने परिवेश में, आपकी अपनी जो दैनिक गतिविधियाँ हैं उसमें किस प्रकार से तकनीक का उपयोग सजगता के साथ कर सकते हैं। जो तीसरी चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है वो है रिजिलियंस। जो भी हम डेवलपमेंट करते हैं उसको हमारे हिसाब से एडाप्टेबल होना चाहिए, वो हमारे हिसाब से उपयोगिता उसकी होनी चाहिए। यदि कोई भी डेवलपमेंट इस धरती के किसी कोने के लिए उपयुक्त है तो वो ज़रूरी नहीं कि हमारे देश की जो भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां हैं उसके लिए भी उपयुक्त हो। इस बात की जानकारी सिर्फ हमें हो सकती है। गूगल का डेवलपमेंट करने वालों ने आज हमारा सारा डेटा अपने नियंत्रण में कर लिया। आज ये जो डेटा का कंट्रोल है ये देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे जितने भी युवा यहाँ पर बैठे हैं या जो भी लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आप सबके सामने ये चुनौती है कि आप अपने डेटाबेसेस पे नियंत्रण करें, क्योंकि यदि आप डेटा को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आने वाले समय में निश्चित मानिए कि आपका कंट्रोल किसी और के हाथ में होगा। क्योंकि आज भारतवर्ष अपनी आबादी के अनुपात में एक इंटरनेट का उपयोग करने वाला एक बहुत बड़ा देश है। हमारी बहुत बड़ी आबादी के पास स्मार्टफोन्स हैं, बहुत बड़ी आबादी लैपटॉप का इस्तेमाल करती है, बहुत बड़ी आबादी सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट करती है। ये सारे प्लेटफॉर्म्स आपके डेटा को कैप्चर करते हैं। ये सारे प्लेटफॉर्म से जो डेटा निकल के जाता है वो आपकी डे टू डे लाइफ स्टाइल, आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स को कैप्चर करता है। यदि इस प्रवृत्ति के बारे में हम सजग नहीं हुए तो निश्चित मानिए आने वाले समय में ये सारा नियंत्रण किसी और के पास होगा। क्यों ना हम ये नियंत्रण अपने पास लेने का प्रयास करें। जो हमारी युवा शक्ति यहाँ पर बैठी है, ये छात्र चाहे फार्मेसी के हों, चाहे नर्सिंग के हों, चाहे एग्रीकल्चर के हों, चाहे इंजीनियरिंग के हों, आप सबके सामने एक कॉमन गोल होना चाहिए। एक सम्मिलित रूप से जो एक विकसित भारत का लक्ष्य है जिसमें कि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग अपने हिसाब से करने का काम करेंगे। आप अपने अपने क्षेत्र के छोटे छोटे एप्लीकेशंस बनाइए। इन एप्लीकेशंस को बनाने में कोई बहुत बड़ी स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। आप छोटे छोटे मोबाइल एप्लीकेशंस बनाइए, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स बनाइए, छोटे छोटे प्रेडिक्टिव टूल्स बनाइए, छोटे छोटे इनेबलर्स क्रिएट करिए ताकि इस तकनीक का इस्तेमाल किसी भी क्षेत्र का हो वो एक आम आदमी कर सके। इस पूरी परिकल्पना है, जो चाहे वो उच्च शिक्षा की परिकल्पना हो, चाहे वो व्यावसायिक शिक्षा की परिकल्पना हो, इस पूरे का उद्देश्य ये है कि हमारे जो मानव संसाधन है उसका पोटेंशियल है, जो उसकी क्षमता है, उसका सदुपयोग होना चाहिए। इस सदुपयोग के लिए जो हमारा शैक्षणिक तंत्र है वो आपको जो भी अवसर देता हो उसका इस्तेमाल करिए। आपके पास जो आपका जो पोटेंशियल है वो इस समय जिस चरम पर है ये दोबारा नहीं आएगा। आज 20 साल, 21 साल, 22 साल, 25 साल लड़के बच्चे के पास जो क्षमताएं हैं, उम्र के साथ आपकी क्षमताएं भी घटेंगी, आपका अनुभव तो बढ़ेगा, लेकिन आपकी सृजनात्मक क्षमता, आपकी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की जो कैपेबिलिटी है वो कम होगी। आपको इस समय इस जंक्चर पर जिस भी एज के हों आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि आपके माँ बाप, आपके समाज, आपके परिवेश ने आपको जो कुछ दिया इसको आपको संधारणीय बनाना है, इसको सस्टेनेबल बनाना है, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए भी इसी प्रकार का समाज, इसी प्रकार की उत्कृष्ट सुविधाएं और पूरा जो वातावरण है और परिवेश मिल सके। ये हमारे सामने एक चैलेंज है। इसीलिए जो विकसित राष्ट्र हैं उन्होंने अब ह्यूमन सेंट्रिक
डेवलपमेंट की बात करने की शुरुआत की। ये थॉट प्रोसेस 2019 के आसपास हुआ और अब आप देखेंगे कि इंडस्ट्री 5.0 के नाम से बहुत सारे रिसर्चेज हो रही हैं, बहुत सारे पब्लिकेशंस आ रहे हैं। ये इस बात को इंडिकेट करते हैं कि हम सबको मिल करके इस विषय के बारे में चिंतित होना चाहिए कि ऑटोमेशन एक सीमा तक ठीक है, ऑटोमेशन और ऑटोमेशन के पीछे की टेक्नोलॉजी एडवांस करनी है, हम सब उसके पक्ष में हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी ह्यूमन सेंट्रिसिटी है, जो हमारा रिजिलियंस है, जो हमारी सस्टेनेबिलिटी है और जो पूरा सर्कुलर इकोनॉमी का एक कॉन्सेप्ट है, उसको आपको फोकस में रखना होगा। Today on this occasion of international conference on which is focusing around the artificial intelligence based applications, I call upon each one of you, whether they are online or offline, please try to figure out the opportunities in which you can make your interventions. As a part of the higher education segment, we have been enabling you and will continue to enable you. Come forward, let us know what specific support you need, whether it is in the form of the enabling for providing you with a certain specific knowledge, certain facilities. The whole ecosystem is ready to take care of it. Please come forward and try to make your best utilization of your potential, and this potential which you use for the good of humanity, it will be much more satisfying to you, to your parents, to the society and the community and the state and the nation you belong. If you don't do it, someone else will do it. Because we are on this path of development, the transformations are bound to happen. Better to utilize this time and do it ourselves. We all are capable ones. We have a common goal of making a developed nation. Why to wait for 2047? Let's do it at the earliest. You might have seen that we have our rank in the artificial intelligence domain has come up. That reflects the kind of consensus which we have in the utilization of these technologies. So this consensus building which has been there, this international conference is going to be, it's a kind of roadmap, it's a kind of impetus which we are giving to the artificial intelligence and its uses. With this, I extend my congratulations to the organizers and a special thanks and mention to the management of this Six Sigma institution for giving me this opportunity to be part of this international conference. And dear students, please utilize your time, try to grasp something, whatever is being presented to you. That's my direction to each one of you. With these words, I extend my best wishes and congratulate you and hope that the deliberations which are going to be there, they will be useful one. Thank you once again. Jai Hind.